Very bright evening, dear artists, art lovers, and art appreciators. I welcome each one of you on behalf of Lalit Kala Academy, New Delhi, in collaboration with Chandigarh Lalit Kala Academy, in association with Government College of Art, Chandigarh, to this National Printmaking Workshop of 75 printmakers of India. I extend a very warm welcome to our chief guest for the evening, Dr. Rahas Kumar Mohanty. He's the Secretary, Lalit Kala Academy, New Delhi. A celebrated name so colossal in the world of art that it warrants no introduction. We're so incredibly honored to have you here with us today, sir. Now, this auditorium, dear ladies and gentlemen, is not just an ordinary room. What I see before me is a constellation of luminous artists that breathes only and only passion and creativity. And as I take a whiff of this passion or this overpowering sense of creativity, I realize how fortunate I am in the company of such spirited beings. So I feel honored to extend a heartfelt welcome to our distinguished printmakers who have come from various regions of India to be with us and to be part of this remarkable celebration. This historic carnival of art that brings together the creative symphonies of 75 printmakers from all across India is a celebration of freedom that is one of its kind in the entire history of printmaking. And as we complete 75 years of India's independence, I believe what better way to revel in the ascents of freedom than through art's sublime embrace. But why art? I ask you, why art? Why does art mirror freedom? For it is in art that we experience the state of liberation, the complete state of forgetfulness of who we are, where we are, why we are. Because when an artist creates, he keeps creating. He creates and creates, he endlessly creates, until that one fine moment when only the creation remains and the artist dissolves into the art. It is then the creator and the creation merge into one wholeness of joy. And this is what I call freedom. This is what I call liberation, which is the celebration of today. And this historic workshop, dear ladies and gentlemen, will make you witness this form of freedom, which I believe is the greatest treasure of mankind's life. So let's begin this creative journey by invoking the presence of the One, the Creator, who's the strength behind all our creative endeavors. I'll request our dignitaries to kindly come up on the stage and light the lamp. I'll request Dr. Rahas Kumar Mohanty, Madam Dr. Alka Jain, Principal, Government College of Art, Chandigarh, Artist B. Malhotra, Chairman, Chandigarh Lalit Kala Academy, Artist Ajit Singh, to kindly come up on the stage and light the lamp. I'll also request artist Mahesh Prajapati and Madam Jaskamal to kindly join us in lighting the lamp. The audience, you all can join us in invoking the blessings of the Almighty with your warm applause. Well, this lamp is a symbolic of our creativity, of the strength that becomes our inspiration, our encouragement to work hard and to propagate art and its cause. Your applause, dear ladies and gentlemen, would add more shine to this ceremony. Thank you. And now, the audience, let's usher in some radiance, some creativity, some freshness by spreading the freshness of flowers. So I'll request Shri B. Malhotra, Chairman, Chandigarh Lalit Kala Academy, and Madam Alka Jain, Principal, Government College of Art, to kindly present a bouquet of flowers to Dr. Rahas Kumar Mohanty, Secretary, Lalit Kala Academy, New Delhi. And next, I'll request Madam Jaskamal and Shri B. Malhotra to kindly present a bouquet of flowers to Madam Alka Jain.
I'll request Madam Jaskamal to kindly join us. And of course, your applause will make the welcome even more warmer. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, to tell you more about this spirited endeavor, I will invite Mr. B. Malhotra, Chairman, Chandigarh Lalit Kala Academy, to kindly say a few words. आज का दिन बहुत हिस्टोरिक डे है और हिस्ट्री में याद किया जाएगा कि 75 प्रिंट मेकर्स एंड 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस कि वी हैव सेलिब्रेटेड थ्रू प्रिंट मेकिंग वर्कशॉप. सो आई कांग्रेचुलेट and everyone, all the participants who are the part of this historical event. और मैं तो being a chairman of ललित कला अकेडमी एंड चंडीगढ़ियन, मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि चंडीगढ़ इस इतने हिस्टोरिकल इवेंट के साथ जुड़ा है. एंड आई फील थैंक्स नागदास जी, उनका एक जो फार्मूला है बिग थिंक डू बिग थिंक बिग, बड़ी अच्छी बात है. आज 1.5-2 साल पहले ये चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी की तरफ से ही तो मैडम हमारे जस कंवल हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ललित कला अकेडमी फ्रॉम चंडीगढ़, एक हमने प्रपोजल भेजा था. तो चलते चलते बड़े इसने उतार चढ़ाव आए. एक बार हमें लगा कि फाइल ठंडे बिस्तर में चली गई है, फिर लगा कि नहीं चेंज हो रहा है. तो काफ़ी अप्स एंड डाउन आए इस वर्कशॉप को करने के लिए. मेरे ख्याल से 1.5 साल से हमारा प्रोसेस चला हुआ था. फाइनली वी सक्सीडेड और चंडीगढ़ इसका पार्ट बना है. मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हमारे सब के लिए बड़ा एक हिस्टोरिकल डे है. बाकी जहाँ तक इसमें जो एफर्ट लगा है, आप सब आए हो, मुझे लग रहा है कि जैसे एक कुंभ मेला नहीं लगता, प्रिंट मेकिंग का कुंभ मेला, तो एक प्रिंट मेकिंग का कुंभ मेला ही है. कुंभ मेले में बड़ा कुछ होता है, बड़ा यहाँ भी बड़ा कुछ होगा. और जैसे घर में बारात आई हुई होती है तो कुछ कमी पेशी भी रह जाती है. जैसे फर्स्ट डे में आज देख रहा था काफी कुछ चल रहा था ऊपर नीचे, मेरे ख्याल से कल से नहीं होगा. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द आर्टिस्ट, आप देख ही रहे हो, दिस इज द बिगेस्ट वर्कशॉप, इतनी बड़ी वर्कशॉप. इससे पहले हमने 75 पेंटर का वर्कशॉप चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी ने किया है शो ये. और पेंटिंग में और प्रिंट मेकिंग में करना एक बहुत बिग डिफरेंस. तो ये काफ़ी बड़ा वो चीज़ है कि हम प्रिंट मेकिंग का वर्कशॉप हो रहा है. एंड दूसरा जो काफ़ी बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट आए हैं, मैं किस का नाम लूँ, अजीत सील जी हैं और ये कुछ नाम मैंने लिखे हुए हैं, आनंदमय बनर्जी है, सुशांता गुआ है, मधुकर मुंडे है, विजय भगोड़िया, विलास शिंदे है, वाल्टर डिसोजा है. बाकी अगर मैं सबका नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहे, कुछ मेरे को ध्यान में आ रहे थे. बाकी बड़ा अच्छा मौका है आप सबसे बात करने का, मिलने का, और शहर के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है ये. तो मैं हमारे अलका जैन जो हमारे क्लास फेलो भी हैं, तो मैं आई फील थैंक्स कि महेश प्रजापति जी, जेपी साहब और सारे जो भी हमारे प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट स्टाफ है, फैकल्टी आर्ट कॉलेज की सारी, उनका काफ़ी इसमें सहयोग रहेगा और सहयोग रहा भी है आगे जो हमारे 5-6 दिन है. तो मैं अलका जी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि इतना बड़ा इवेंट, एंड इनफैक्ट आई कांग्रेचुलेट यू कि आर्ट कॉलेज इसका पार्ट बना इतने बड़े इवेंट का. और आज मेरे को जगमोहन चोपड़ा जी की भी याद आ रही है. ही वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस प्रिंट मेकिंग का जो सब्जेक्ट इधर लॉन्च हुआ था. और उनके टाइम में भी बड़ी अच्छी वर्कशॉप हुई है प्रिंट मेकिंग की. तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है उनको आज याद करते टाइम कि ये हिस्टोरिकल इवेंट यहाँ पे हो रहा है. और जो बाकी जो शहर से एंड हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, जो सारे पार्टिसिपेंट आए हैं. एक दिन हमने प्लान भी किया हुआ है, आपको हम सिटी ओरिएंटेशन टूर ऑन होप ऑफ बस, उसके ऊपर भी आपको घुमाएंगे. पर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप टाइम का पंक्चुअल रहना, क्योंकि ऐसा ना हो कि पूरा दिन हम आपको लाने ले जाने में ही लगे रहे, मतलब कि तो ये टाइम का आपने पूरा ध्यान रखना है. आज तो चलो पहला दिन था, सब माफ है, मतलब कल से मतलब कि यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल. और जो जैसे आज सारी अच्छी स्ट्रेंथ है, लास्ट डे जो हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है वी विल डू इन द ऑडिटोरियम ऑफ गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी. तो उसमें आप सब ने इसी स्ट्रेंथ के साथ सब ने आना है. और मैं ये चाहूँगा कि जैसे हमारा 12 को लास्ट डे है, तो 11 तक या 12 सुबह तक बस
वो आप पूरा कंप्लीट कर लो काम। वी हैव टू एग्जिबिट, एक एग्जीबिशन भी है, उसको भी हमने करना है। तो महेश जी थैंक यू वेरी मच, आप उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हो। वैसे तो सारा ही आप ये देख रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको चाहूंगा थोड़ा सा एडवांस में काम करके रखना। ऐसे ना हो कि उधर हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं, इधर से प्रिंट निकल रहे हैं, मतलब वो वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। आप उसी हिसाब से प्लानिंग करो, मतलब कि वी वांट एग्जैक्ट 75 प्रिंट्स, तभी ये सक्सेसफुल रहेगा। 73 के निकले, 2 भी रह गए ना, फिर भी समझो ये प्रोग्राम कामयाब नहीं है। वी वांट ऑल 75 प्रिंट्स। प्रिंट हमने माउंट बनने दे भी दिए एडवांस में, अब बस आपके प्रिंट अब कल से वी वांट योर सिंसियर एफर्ट्स। तो उसके बाद जो हमारा ललित कला एकेडमी का स्टाफ दिल्ली से आया, राकेश बजाज है, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे नाम नहीं याद आ रहे आप सबके। सो आई फील बंडल ऑफ थैंक्स, आप लोग इतनी दूर से चल के आए हो टू मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। और जो हमारा स्टाफ है, ललित कला अकेडमी का स्टाफ है, शिल्पी अरोड़ा है, श्रुति है, विशाल जी है, जो धामी साहब बैठे हैं, और जो वर्मा जी है, रविंदर शर्मा जी हैं, कमल पाल जी हैं, और जो हमारे शहर के आर्टिस्ट हैं, हम सबका मैं तहे दिल से थैंक्स करना चाहूँगा कि आपका इस प्रोग्राम को सफल बनाने में पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारे जो भी ललित कला अकेडमी के आगे प्रोग्राम रहे हैं, आगे ये वाला प्रोग्राम तो हमारा बड़ा स्पेशल है, एंड यू आर आल्सो स्पेशल फॉर अस। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. I'll now request Madam Dr. Alka Jain, Principal, Government College of Art, to kindly say a few words on this momentous occasion. Is ma'am here with us? Yeah. Good evening, everybody. First of all, welcome you all over here. I think some must be first timers over here in Chandigarh and in fact in Arts College. I hope you like our ambience and the studio spaces. I hope everything was in place. I had made full efforts for it. I had kept Dr. Mahesh Prajapati and Dr. JP Singh and Nutan Madam and Pritpal Singh and Lakhwinder Ravinder for welcoming you all on my behalf to this college, because I had little bit busy schedule on my personal front. I couldn't be there for you right in the morning. Sorry for that. I hope you loved our college. We'll be interacting with each other soon. And first of all, I'll welcome our chief guest, Rahas Mohante ji, to be with us and make this inaugural event enthusiastic for us, because every participant must be looking forward for it. Now coming to the graphics department. Our department is way back older than myself also. 37 years have gone by for me in this college. I think I don't know what is the older date of it. And Professor Jagmohan Chopra was the man behind setting up this department. And he was such a visionary person. When I came to this college for admission, I took my BFA degree from this college. He said I was an engineering student. He said, I want multidisciplinary students over here coming up. And now it is NEP. National Education Policy also says the same thing. They want visionaries who are multitaskers, multidisciplinary persons. And he was such a person that he had vision 40 years back. So I think this department carries a very great historic, and I think he must be over here now. He must be very happy. I want huge round of applause that ये सारा कॉलेज गूंजे उनकी तालियों से, ताकि उन तक वो आवाज पहुंच सके. Now coming up to this event. I had talked to Mr. B. Malhotra had talked to me.
he said, "Ma'am, ऐसा कुछ करना है, Alka," because I am his class fellow. So I knew about him and he knew about me कि ये तो होता है ना भोलापन, उनको मेरा पता, मेरे को उनका पता है, तो एक माइंड सेट होता है कि हम कर जाएंगे ये काम। उसके साथ हमारी मैडम है जसकमल मैम, शी वॉज माई सुपर सीनियर, शी हैड सेड अलका कर लेंगे हम, सो आई हैड अ टॉक विद हिम। उसके बाद मैंने डिस्कस किया अपने सारे फैकल्टी मेंबर्स, आई हैड अ गो, मैडम ये तो करना ही करना है, इट इज़ अ इवेंट, इट इज़ अ हिस्टोरिक इवेंट फॉर दिस कॉलेज। हमारी पहले यहाँ पे हो चुकी हैं, कैरल समर्स की वर्कशॉप हुई थी यहाँ पे हमारे टाइम, Krishna Reddy was, I was in, I think, 3rd, 4th year, we had workshop by Krishna Reddy, viscosity method. So I had very inhibitions, but now I am seeing I could manage it with all your support. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Well, ma'am has been a beacon of brilliance, motivating, inspiring, encouraging young professionals to soar high in the light of their creativity. Once again, thank you so much, ma'am. And now, dear audience, let's take a moment. Let's take a moment to celebrate the presence of those charming souls who are the heartbeat of this celebration, or I may say the soul of this soiree. So let's welcome these artistic luminaries with open hearts and open arms as they stand at the center of our celebration. For that, I will request Mohanty sir, Madam Alka Jain, Mr. B. Malhotra to kindly come up on the stage and welcome our participating artists. I'll first request artist Sita Kerketa from Andaman and Nicobar. Artist Sita Kerketa, let's hear it for her, dear audience. She's come all the way from Andaman and Nicobar. Next we have is artist Murli Das PV from Andhra Pradesh. Let's see a little more enthusiasm and spirit in your applause, dear audience. They've come from different regions of India to be here with us. Next artist is artist Jintu Mohan Kalita from Assam. Next we have is artist Madhusudan Das from Assam. Artist Madhusudan Das from Assam. I'll request artist Upasna Bora to please be ready. Artist Madhusudan Das from Assam. Next we have is artist Upasna Bora from Assam. I'll request artist Mahesh Singh from Uttar Pradesh. We have with us artist Mahesh Singh from Uttar Pradesh. Next we have is artist Tribhuvan from Uttar Pradesh. Next we have is artist Durga Das Garai from Gujarat. After Garai sir, artist Sunil Darji from Gujarat. Artist Durga Das Garai from Gujarat. Next we have is artist Sunil Darji from Gujarat. Artist Kapil Manna from Madhya Pradesh is requested to be ready. Artist Kapil Manna, and after him we'll have artist Rajesh from Madhya Pradesh. Artist Kapil Manna from Madhya Pradesh. Next we have is artist Rajesh Ambalkar from Madhya Pradesh. After him I'll request artist Anil Bihari from Bihar. Artist Anil Bihari from Bihar, and after Anil sir we'll have artist Divya Singh. Next we have is artist Divya Singh from Bihar. After ma'am we'll have artist Hem Lata from Jharkhand. Artist Hem Lata from Jharkhand. Artist Divya Singh from Bihar. Artist Hem Lata from Jharkhand. Next we have is artist Mahesh Prajapati from Chandigarh. Now this is the kind of energy I'm expecting from you. Artist Mahesh Prajapati, I'll request artist Anita Kaur from Chandigarh to please be ready. And after artist Anita Kaur, we'll have artist Amit Kumar from Chandigarh. Next we'll have is artist Amit Kumar from Chandigarh.
Artist Ishwar Dayal from Chandigarh. And after Sir, we'll have artist JP Singh from Chandigarh. These are the seasoned faculty members of Government College of Art who have significantly contributed to the field of printmaking. Artist Ishwar Dayal. We also have with us artist JP Singh from Chandigarh. Another distinguished printmaker from Chandigarh. Next we have is artist Lakhvinder Singh from Chandigarh. And I'll request artist Prithpal Singh to kindly be ready. Artist Prithpal Singh. I'll request artist Subhash Shaure from Chandigarh to please be ready. Next we have is artist Subhash Shaure from Chandigarh. After Sir, we'll have artist Rahul Dhiman. And after Rahul Sir, we'll have artist Yati Dutt. Artist Rahul Dhiman, let's hear it for him, dear audience. Next we have is artist Yati Dutt from Chandigarh. After him we'll have artist Dalvinder Singh from Chandigarh. Artist Dalvinder Singh from Chandigarh. After Sir, we'll have artist Abhishek Tiwari. Artist Abhishek Tiwari. And after him, we'll have artist Sachin Lohan. So please be ready accordingly. Artist Abhishek Tiwari. Thereafter, we have artist Sachin Lohan from Chandigarh. And after him, we'll have artist Vikas Ved from Chandigarh. Artist Vikas Ved. The audience, let's be democratic in your applause, right? You should applaud same for everyone. So I want to see more energy and more spirit in your applause. Artist Vikas Ved, artist Mandeep. Artist Mandeep from Chandigarh. And after him, we'll have artist Manupriya Gautam from Chandigarh. After Sir, we'll have artist Manuk Prasha from Chandigarh. So I'll request Sir to kindly be ready. Artist Manuk Prasha, ma'am to kindly be ready. Let's hear it for Madam Prasha. Next we have is artist Nutan Dhiman from Chandigarh. I'll request Nutan ma'am to kindly come up on the stage. And after ma'am, we'll have Varsha Badal, artist Varsha Badal from Chandigarh. Artist Varsha Badal. And after her, we'll have artist Radha. So please be ready. Artist Radha from Chandigarh. And after her, we have artist Rajkumar from Chandigarh. And after Sir, we'll have artist Trina Bhatnagar from Chandigarh. Artist Trina Bhatnagar from Chandigarh. After ma'am, we'll have artist Sunaina Bhagat from Chandigarh. Is Sunaina ma'am here with us? After her, we'll have artist Vinod Kumar from Chandigarh and Tanushri Sen Gupta from Chhattisgarh. Artist Vinod Kumar. I'll request Madam Sen Gupta from Chandigarh to please be ready. Next we have is artist Tanushri Sen Gupta from Chhattisgarh. After her, we'll have artist Sushmita Adhyamiti from Chhattisgarh. After madam, we'll have artist Anmol Soni from Chhattisgarh. Artist Anmol Soni from Chhattisgarh. Next we have is artist Amit Kumar Chakraborty from Chhattisgarh. After Sir, we'll have artist Anu Gupta from Delhi. So I'll request Anu ma'am to please be ready. Artist Amit Kumar Chakraborty from Chhattisgarh. Artist Anu Gupta from Delhi. After her, we'll have artist Ananda Moy Banerjee from Delhi. Anand Moy Banerjee from Delhi.
After Banerjee sir, we'll have artist Jayant Gajera from Delhi. Artist Jayant Gajera from Delhi. So we have an amalgamation of senior aspiring artists together celebrating art. What a wonderful moment. Next we have is artist Shushanta Guha from Delhi. Artist Shushanta Guha from Delhi. After sir, we'll have artist Vijay Bagodi from Gujarat. Artist Vijay Bagodi from Gujarat. Artist Walter D'Souza from Gujarat. And after sir, we'll have artist Rakesh Bani from Haryana. Artist Rakesh Bani from Haryana. After Bani sir, we'll have artist Ishu Jindal from Haryana. So we lastly had artist Ishu Jindal. Next we have is artist Rajesh Kalsi. Mr. Ram Pratap next. Next we have is artist Rajesh Kalsi from Punjab. Artist Alka Chavda from Karnataka. After madam, we'll have artist Sridhar Murthy from Karnataka. So I'll request sir to please be ready. Artist Alka from Karnataka. A round of applause, dear ladies and gentlemen, for her. Next we have is artist Sridhar Murthy from Karnataka. After sir, we'll have artist Sunil Lal from Kerala. Artist Sunil Lal from Kerala. I'll now request artist Mahesh Prajapati to kindly join us in welcoming our participants. Our next participant is artist Sunil Lal from Kerala. Next we have is artist Ajit Seal from West Bengal. Next we have is artist Amlesh Das from West Bengal. And after sir, we'll have artist Atun Pramanik from West Bengal. I'll request Vishal sir. Next we have is artist Ramendra Nath Kasta from West Bengal. Kasta from West Bengal. After sir, we'll have artist Shukla Sen Podar from West Bengal. After madam, I'll request artist Rabindra Shankar Roy to kindly be ready. Artist Rabindra Shankar Roy. After Roy sir, we'll have Amruta from Maharashtra. We have with us Rabindra Shankar Roy from Tamil Nadu. Next we have is artist Amruta Sambharkar from Maharashtra. I'll now request Shri J.P. Singh to kindly come forward to be with us here on the stage in honoring our participants. After Shinde sir, we'll have artist Madhukar Munde from Maharashtra. After sir, we'll have artist Anant Nikam from Maharashtra. Artist Preetham Dyoskar from Maharashtra. I'll request Ravinder Kumar Sharma to kindly come forward. We have with us artist Preetham Dyoskar from Maharashtra. Artist Vikash Chandra Senapati from Odisha. And after sir, we'll have artist Ramahari Jeena from Odisha. I'll now request artist Kamval Pal to kindly come up on the stage and join us in welcoming our participants. Next we have is artist Mona Gupta from Odisha. Artist Subarto Mondal from Rajasthan. I will now request Dhami sir to kindly join us on stage. Yatisha K from Rajasthan. I'll also request artist Ranjan, artist Yogesh Ahmed Ghani from Rajasthan. And next we have is artist Shalini Chaudhary from Uttarakhand. I'll request Dhami sir to kindly be with us on stage. Well, this brings us to the end of the list. We also request artist Jas Kamal to kindly come up on the stage. Well, she is the coordinator
from the side of Chandigarh Lalit Kala Academy. She's a representative of the academy, and we'd like to present a bouquet of flowers. Artist Askamal, a huge round of applause, dear audience. Next we have is Dr. Rajesh Sharma. Dr. Rajesh Sharma, I'll request sir to please be with us on stage. Next we have is Dr. Pramod Arya. Do we have any other participating artist who's here with us but I somehow missed their name? Is there anyone present in the hall? Anyone from the participating artists who's here with us? Do we have all covered? So Shruti, शिल्पी अरोड़ा, पावनी फ्रॉम कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। ये यहाँ पे तो हमने 75 वाला काम कर लिया बड़ी मुश्किल से। तो हमारा जो 12 तारीख को जो फंक्शन है उसमें मैं भी गवर्नर साहब आए, पक्का तो मैं नहीं कह रहा, हमने लिखा हुआ है वहां पे, उनके पास तो टाइम होगा नहीं इतना देने का, इतना ये इस तरह वाला। तो मैं आप आर्टिस्टों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हम ये डिसीजन लेते हैं, देयर आर 24 स्टेट्स, हम हर एक स्टेट में से एक एक को बुलाते हैं, मेरे ख्याल से आप सब एग्री होंगे और माइंड नहीं करोगे आप। हाथ खड़ा करो, सब सही है, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। उस दिन हम वही सोच रहे थे सेक्रेटरी साहब के साथ कि 7 है, सो वी आर थिंकिंग कि अगर वो आते हैं तो फ्रॉम 1 स्टेट, तो ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड, थैंक यू वेरी मच। And now I'll invite Madam Jaskamal, a renowned printmaker of the city Beautiful and a representative of Chandigarh Lalit Kala Academy, to kindly say a few words on the occasion. ये वर्कशॉप इतनी बड़ी है कि बाकी स्टेट्स में जब एक एक दो दो वर्कशॉप जाती थी ना, तो मैं बहुत दुखी होती थी कि उनको इतनी मिल गई, हमें तो एक भी नहीं मिल रही है, हम क्या करें। लेकिन जब हमें मिली तो हमें 5 वर्कशॉप के बराबर एक वर्कशॉप मिली है। तो आई एम हैप्पी, हम सारे मिलजुल के जोरदार दम लगाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स देंगे ताकि ये यादगार रहे। क्योंकि अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं इस इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी बात बोलने वाली हूँ कि अपने इंडिया की हिस्ट्री में ये 2 इवेंट बड़े हुए हैं प्रिंट मेकिंग पर। होते तो बहुत सारे हैं, कोई 40 आर्टिस्ट, कोई 50 आर्टिस्ट, कोई 50, लेकिन 79 में एक बड़ी वर्कशॉप हुई थी यहाँ पे, जब मैं स्टूडेंट पास आउट होकर निकली थी। वो यहाँ के जो मेन हमारे प्रिंसिपल थे एंड मेरे मेंटर रहे हैं जगमोहन चोपड़ा जी, जिनके अंडर मैंने काम किया है, मैंने प्रिंट मेकिंग ही उनसे सीखी है मैं कहूँगी तो। उस वर्कशॉप में 100 आर्टिस्ट थे और उसके बाद मेरे को लगता है 60 साल हो, 50 साल तो हो गए, 50 साल बाद अब हमें ये इतना बड़ा इवेंट मिला है। और ये इस शहर की, इस कॉलेज की खुशकिस्मती है कि इसको दोनों इवेंट इसी को मिले हैं। ये हिस्ट्री सबसे बड़ी हिस्ट्री है। लकीली 2 इवेंट हुए इंडिया में, दोनों ही इस कॉलेज को मिल गए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी चंडीगढ़ ललित कला को, उस चीज़ को आगे दोबारा बढ़ाया जाए और उस शो को दोबारा कंटिन्यू किया जाए। चंडीगढ़ में एक प्रिंट एग्जीबिशन एवरी ईयर एनुअल होनी चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है चंडीगढ़ ललित कला से। बाकी आए हुए सब साथियों को मेरा बहुत बहुत थैंक्स। हमारी तरफ से कोई कमी पेशी रह जाए प्लीज़ उसको बुरा नहीं मानना, जो लगे आप हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उसको सारी को पूरा करें, आपके साथ खड़े रहें। आप भी हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हुए हमारे साथ मिलके चलें, जो ज़रूरत हो तो ज़रूर बताएं, हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. I'll now request Dr. Rahas Kumar Mohanty, Secretary, Lalit Kala Academy, New Delhi, to kindly share with us his words of wisdom on the occasion. Sir. Thank you very much. Good evening, all my friends. And it's really a wonderful evening because I think everybody have seen
every day there is a evening, but today evening is a special. I think it is definitely special, and it is a 75 printmakers, more around 22 states and union territory. What I had seen the list, 22 राज्यों से कलाकार एक जगह में आना, जैसे भीम जी ने बोला कि कुंभ है, डेफिनेटली इट इज नॉट कुंभ, इट इज बियॉन्ड कुंभ, इट इज ए महाकुंभ, सभी लोगों की समागम है आप लोगों की. I am very much fortunate being a part of this Mahakumbh of printmaking, 75 printmakers of the India, and I am really very much thankful to our chairman, Professor B. Nagdas. Due to his ill health, he is not able to be here today, and the today programs is basically it is the entire credit from my side. I think it is goes to Professor V. Nagdas ji and Chairman State Chandigarh Lalit Kala Academy Bhim Malhotra, and their continuous effort, because I am sitting in my office and I have become an instrument between two and the coordination. I put all my efforts whatever best I can, and my sincere thanks to Alka Madam ji giving a very beautiful venue. और आर्टिस्ट के लिए भी मैं आते ही लगा कि दिस इज रियली ए वंडरफुल प्लेस. और आप सभी लोगों को देखे मुझे लगता है कि my I am not a painter, I am not an artist, but I am a student of art history and archaeology, ancient history. But my entire life went in between all these artists. I have the experience of sculpture, painting, printmaking. This is my opportunity because this is the blessing of the God and blessing of all the artists. So I am taking that test, everything in my life. आज जो मैंने यहाँ चंडीगढ़ में आया फर्स्ट, whenever I entered this college, I saw the ambience and just I remember the Lee Corbusier, the architect of this city, and I thought they have the foresightedness and कैसे उन्होंने बनाते हैं इतना सुंदर चीज जो आज तक भी कंटिन्यूटी करता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम सभी लोग 75 आर्टिस्ट जो यहाँ पे आए हैं, मेरा जो पर्सनल फीलिंग्स ये है कि दे आर डेफिनेटली 75 आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ दिस कंट्री, बट दिस इज ए प्लेस ऑफ ए कॉलेज. यहाँ पर मोर देन नियर अबाउट 400 स्टूडेंट्स एवरी ईयर पढ़ाई करते हैं. सो इट विल बी इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स एंड द एक्सपर्ट एंड द स्टूडेंट्स. जो गुरु शिष्य परंपरा हमारी चलता था, लोग वहाँ पे शिष्य गुरु से सीखता था. सो दिस इज ए मेथड, दिस इज ए मीडियम, और दिस इज मैं कहूँगा an opportunity for the students of this college and the artists from this city. They can take part in this wonderful artist camp और अपना इंटरेक्शन कर सकते थे. एंड सबसे बढ़िया लगता जब से मैंने देखा कि फर्स्ट अंडमान निकोबार से भी यहाँ आर्टिस्ट आए हैं. सो दो यू नो दिस कंट्री यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड कंप्लीट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज नाउ इन चंडीगढ़. This art college of the amalgamation of all this unity and diversity is here. I'm really my sincere thanks to all the artists, all the senior artists, 75 artists, all artists. They have come from different parts of the India, and definitely I'm sure after 6-7 days wonderful काम निकल के आएगा. And I'm very happy कि dignified guest यहाँ आएंगे और वैलिडिक्टरी प्रोग्राम होगा. आई विश कि माय चेयरमैन आल्सो बी पार्ट ऑफ दैट इफ हिज हेल्थ विल रिकवर. एंड अगेन आई एम थैंकिंग टू ऑल द आर्टिस्ट हु आर टेकिंग पार्ट एंड ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द आर्टिस्ट फ्रॉम नियर बाय Chandigarh, and this college principal along with Alka Jain and Bhim Malhotra and his team, and also my team from Lalit Kala Academy. I'm thanking all of you and wish you all a wonderful time here at Chandigarh, and this camp will be definitely I'm sure it will be a remarkable event throughout the times. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your words of encouragement. Your presence today has certainly made this already charming evening even more charming. And as they say, gratitude is the door to abundance. So let's take a moment and unlock this door to happiness. I'll request Mr. B. Malhotra, Chairman, Chandigarh Lalit Kala Academy, and Madam Alka Jain, Principal, Government College of Art, to kindly present a memento
To artist Dr. Rahas Kumar Mohanty, Secretary, Lalit Kala Academy, New Delhi. I'll request Madan sir, artist Madan Lal, to kindly join us. This beautiful painting has the painting of artist Madan Lal printed on it. Thank you, sir. The audience, this brings us to the end of this ceremony, and that of course promises a new beginning, a beginning for a more creative, for a better and a blessed tomorrow. We'll now have a group photograph.